Okay, so there are two things we're talking about. One is on does ego create or does it stop creation? And the second conversation we were having was on, or is having on, what was it? Wait 1 second. That we had discussion on the group. किसी को याद है? कुछ ऐसा ही simple सा था कि हाँ, when you try to control somebody else, you stop creation from happening. So let's start with the first one. Uh, in the beginning of time, and this is all from the Shastras, I can't verify this, okay, uh, is that there was nothing. And then separation happened, which led to creation. So separation itself means a creation of identity. I am separate from you. That separation of identity is what's called, or the existence of identity is created by what's called the ego. If the ego doesn't exist, there is no such thing as identity or separation. So ego is actually the seed of separation more than anything else. How you use it, so you could use it for the benefit or destruction, completely your choice. If you see yourself superior to other people, you see it as a destruction tool. If you see yourself as an equal, you see it as a constructive tool. If you see yourself or your identity as one to serve, that's the most or the biggest that you can create from ego, without, of course, giving up on your what we call as self-respect. So ego helps you create no matter what. Now, in your ego, you could say, I am not going to do something. And that would mean you could become lethargic, you could procrastinate, or you could just be stubborn. But you are creating a lethargic, a procrastinating, and a stubborn person. So that also leads to creation. So ego always leads to creation of whatever you choose. So that's answering that. The other question was the control part. When I control or try to control somebody else, I am now going beyond my body. And all these days, we're talking about what? How to understand yourself, be aware of yourself, because you are the creator, rather than looking outwards. Your universe is from your perspective, and you can't impose your perspective on anybody else. You can observe it, but you can't impose it. You can impose only from your perspective on yourself. And as your aura expands, there will be some people who will come in line with what you're doing in life's journey, and somebody who will not fall in line. So, how do you, in this case, now what happens is when you up, if you control, you're trying to control people, and you're like, okay, I wish they could do this, I could do this. This is showing that you are not happy with what you are. And one simple affirmation for that is, I am enough. Whenever you choose to control somebody, you just say, or keep repeating to yourself, I am enough, I am enough, I am enough, I am enough. And slowly the desire to control another person or being or energy will completely disappear. You are enough. Okay, so that's the answer to this. Let's open it up for more questions if there are any at the moment. Thank you so much for everybody who's joining in. We're doing a lot of question and answers and the questions that came up in the group. How do I? There was a question I was asked in the beginning of the week. Somebody's not paid me money. What do I do? You create an aura of receiving so that the money comes to you. What do we do normally when somebody doesn't pay us? I wish they go to hell. I wish they lose all the money. No, in fact, you should say, I wish they make so much money that what they owe me becomes like little change for them and they can easily give it to me. It's as simple as that. Okay, questions? Of what have you been doing? Let's see what questions anybody has.
यस मनोज जी। आपको नमस्ते सर। आपको नमस्ते। सर अभी आपने बोला ना कि मतलब मनी का ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो सर मतलब मैंने भी जैसा सीखा था कि मतलब कि उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच होती है तो इनफाइनाइट मनी है। तो हाउ टू बी वाइब्रेट इन हायर फ्रीक्वेंसी इन सेम फ्रीक्वेंसी अबाउट ऑफ द मनी। So, how do you feel? Oh, yeah, okay. So, this is your exercise anyway to start off from tomorrow. Good question. What you're going to say is ask yourself every morning, how are you feeling when you wake up? If you're feeling better than yesterday, then you are in a higher frequency. If you're feeling worse than yesterday, you are in lower frequency. If the number of days in a week you feel better, that means you're growing. More number of days. If less number of days you're feeling better, then you are declining. Very simple. So ask yourself every morning, how am I feeling this morning? Oh, हो वही बेकार लाइफ, वही बेकार ये सब। तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है कि लाइफ बेकार क्यों है, लाइफ में ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में खराब चल रहा है? अरे पर ये है, ये है, ये है। एंड लाइक दिस से देन, राइट, यू स्टार्ट counting your blessings, and then and that is just a simple tool to for you to start growing in higher frequency. Nobody's saying your life is not messed up. Okay, nobody's saying that, but we need to get out of it, right? And we can't climb a mountain by looking downwards. We have to look upwards. So we have to look what we can and what we have, not that what we don't have. And that's the only way to increase or move your frequency upwards. सर कैन आई आस्क अनदर क्वेश्चन प्लीज? रत्नेश को पूछते तो उसके बाद वापस आता हूँ आपके पास, अगर और कोई नहीं हुआ तो ठीक है। ओके, थैंक यू। यस रत्नेश जी। ओके, यस। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो भी असाइनमेंट्स दिए थे वो मैंने हम्म। बहुत ट्राई किया उसके आंसर्स अंदर से फाइंड आउट करने के, लेकिन मैं वो मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं करके। तो फॉर गिव दैट मी व्हाट गिव इज द मी एन सॉल्यूशन? एग्जांपल। गिव मी एन एग्जांपल। वन क्वेश्चन एग्जांपल दो मुझे। अभी जो कल का असाइनमेंट था उसको ही ले लीजिए, और फिर परसों का भी क्या असाइनमेंट। था, क्या तो था आई बताओ वाज मुझे। क्या three था सर? thoughts you have about life in general, and all that questions. Three thoughts you एक have एक about एक एक yourself. क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बताओ मुझे, एक क्वेश्चन बताओ। अ, एक तो नहीं, मतलब इन जनरल जो भी नहीं क्वेश्चन नहीं, थे मुझे तो मैं हाँ मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताओ मुझे से। अ, कोई भी ले सकते हो आप। नहीं नहीं, आप क्योंकि एक मैं क्वेश्चन लो। आप एक क्वेश्चन लो, बताओ कौन सा क्वेश्चन। क्योंकि जैसे मैं सोचने जाता हूँ एकदम नहीं नहीं, आप एक थॉट्स क्वेश्चन एकदम लो। एक केओस हो क्वेश्चन लो। जाता है माइंड में। मैं समझ गया, आप एक क्वेश्चन बताओ मुझे। अ, कोई भी ले सकते हैं हम कौन सा इसमें। लो, हाँ बताओ कौन सा लेना। अभी जैसे कि ये दिया था आपने, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बिलीफ, सो व्हाट इन इज व्हाट बिलीव रिलेशनशिप्स। इन अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज योर व्हाट, पूरा क्वेश्चन क्या था, ठीक से बताओ पूरा क्वेश्चन क्या था। ऐसे ही था, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बिलीफ, फिर आपने कुछ 3 पॉइंट्स दिए थे कि इन रिलेशनशिप्स आई बिलीव दैट, लिखना था हमें। हाँ, सो व्हाट इज मनी योर ऑलवेज। बिलीफ, व्हाट इज योर बिलीफ। आपके आप अच्छा, आपके आपके मेरे को आपके रिलेशनशिप के बारे में बताओ, कौन कौन है आपके घर में। एक्चुअली जॉइंट फैमिली हमारा, तो वी लिव टुगेदर। हाँ तो चाचा कौन चाची कौन है, फिर है? अच्छा अच्छा, दादा अकॉर्डिंग टू दादी है। यू, अकॉर्डिंग टू यू हाउ आर चाचा चाची, व्हाट इज योर बिलीफ अबाउट चाचा चाची। अच्छा रिलेशनशिप है, खराब है? न्यूट्रल है फिलहाल तो। कुछ नहीं मतलब वैसे मेरा वैसे क्या है? घर में किसी आप से उनको भी घर में उनको देखते हो, आप उनको देखते हो, वो कैसा लगता है? पहले तो अच्छा था, बट 2-3 साल से तो सबसे अच्छा नहीं है। अच्छा वेरी गुड, घर अब में यहीं पे रहो। किसी हाँ से भी। हाँ, बस बस ओके। ठीक है, अभी अभी यहीं पे रहो, मैं आपसे सवाल पूछता रहूंगा, ठीक है। आपने बोला मेरा बिलीफ है कि पहले अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है, ओके। अब अच्छा क्यों नहीं है, व्हाट इज इट दैट यू डोंट लाइक अबाउट देम, क्या पसंद नहीं है आपको? एक्चुअली 2-3 इयर्स से मेरा हेल्थ इश्यू चल रहा था, तो आई एम वेरी फील अलोन, एंड मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो गया है। हाँ। और पर्पस नहीं रहा है अभी कुछ लाइफ में। नहीं नहीं, वो तो अलग पहले बात मैं है। आपका चाचा चाची से क्या क्या बात अच्छी नहीं लगती? आई डोंट फील इंक्लूसिवनेस
वो अपने आप में खुद में रहते हैं ऐसे तो। तो आपको आपको अलग कर दिया, राइट? यस। अब आपका क्या एक्सपीरियंस हो गया? अब आपसे कोई बोलेगा अरे चाचा चाची मेरे ऐसे, तुम बोलोगे वो ऐसे ही है, मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था, मेरे चाचा चाची ने भी मेरे को ऐसे ही बिहेवियर किया था। अब सारे लाइफ की जिंदगी भर के चाचा चाची आपके लिए वो बन जाएंगे, द सेम दैट द वे यू ट्रीटेड, दैट इज व्हाट योर बिलीफ सिस्टम बिकम्स। फॉर ओके। एग्जाम्पल, आपके घर में काम करने आते हैं लोग, हम्म। और मतलब घर में मतलब घर में कोई काम करने सफाई के लिए कोई आता है, कोई ऐसा है? मेड मेड बोल रहे हो आप? हाँ, मेड बोल रहा हूँ। यस यस। हाँ। तो क्या बोलते हैं, इनको ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना, इनके आगे आगे पीछे पैसे मत छोड़ना, कुछ उठा लिया तो, ऐसा बोलता है कोई घर में? ये किसी ने हाँ बोला था कभी कभी? कभी। यस। कभी तो ये कभी क्या हुआ? बोलते हैं। ये क्या हुआ? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ यस। ओके, तो दीज आर ऑल बट योर हम बिलीफ सबको सिस्टम। ऐसे जज नहीं कर सकते वो हिसाब से। हाँ, पर ऐसे ही बिलीफ बोल रहे हो सिस्टम ना तो आप? बन हाँ गया ना। हमने, हाँ नहीं, हाँ। वो बात की बात है, पहले आपका बिलीफ सिस्टम क्या है वो आपने वो लिखना है, आपने वो ओके लिखना ओके। है, ठीक है? हाँ। राइट दैट डाउन प्लीज। नाउ ओके। कैन यू राइट डाउन योर क्वेश्चंस? आई विल ट्राई यस। ओके, प्लीज ट्राई। मतलब थोड़ा अभी समझ में आया कैसे सोचना है। अगर कुछ वेरी गुड। बाद में नहीं समझ रहा है तो मैं आपको डाउट पूछूंगा। ऑफ कोर्स, 100%, एनी टाइम मैं हूँ, इसीलिए। यस। मुझे वही वही था कि मैं कैसे पूछूं क्योंकि मैं कुछ असाइनमेंट मुंह ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, अगली तो बार वही मुंह था कि अगली बार मुंह से पूछ लो। सोचना श्योर। मत, ठीक है? पूछ लेना डायरेक्टली। यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। एनीबडी एल्स हैव क्वेश्चंस? हाँ जी, मनोज जी पूछिए। सर उसके मनी के रिलेटेड ही था कि मेनी टाइम्स वी हैव टू कंपेयर एंड सोसाइटी आल्सो ट्रिगर टू यू के वो कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर द रिचर एंड रिचर एंड यू आर डूइंग मैनी मोडिलिटी, बट हाउ यू आर नॉट, मतलब मैं उस तरीके से, मतलब उस ग्राफ के हिसाब से, मतलब मैं उस तक नहीं पहुंच रहा हूँ। तो सो मेरी मतलब वो कंसिस्टेंसी चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब ये मेरे को खुद को पूछना है आपसे कि मतलब कि क्या चैलेंजेस, मतलब मैं खुद में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ सर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ ना थोड़ी सी। फ्रीक्वेंसी मतलब सर, मतलब क्या उसके लिए कुछ ऐसा टिप दीजिए सर, तो क्या करूँ ऐसा? किसको? अरे वो अभी मुझे आज सर, तो मतलब अभी मैं शुरुआत ही आपने उससे की ना। आपका क्या सवाल था पहला? पहला कि सवाल मैं समझा सर, मैं उसमें लिखा भी मैंने फ्रीक्वेंसी कैसे हो कि पर मनी की फ्रीक्वेंसी सेम ही होती है ना, वैसे ही बढ़ेगी। ओके। सो मतलब मैं और मनी की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाएगी तब तक मतलब मैं मनी मैग्नेट बन जाऊंगा, ऐसा ऐसा ही है ना सर? धीरे धीरे करके। ओके। लॉट्स ऑफ ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। Any more questions at the moment? Or am I free to leave today? No more questions? So the whole point was today was to open up and ask questions. So okay, here insecure about feeling kids when they are abroad. Vanna ji, are you on the Magic and Miracles group? Yes, you are. And in that it's very clearly stated, no, that you need to let go of your kids. आज ने बात ही उसी की सारी कि बच्चों को छोड़ दो। तो छोड़ दीजिए। आपके बच्चे बच्चे नहीं रहे। Stop calling them kids. Okay, cool. और कुछ questions हैं अभी? Annual, excuse me. That's all right. Nobody has to be sorry for not coming on the camera. It is purely for answering questions. So your assignment today is to keep repeating for the whole weekend. I am enough. I am enough. I am enough. I am enough. I shall share more stuff on the group as we go along in the weekend. Just please complete all the videos that we have done till now, catch ups, because we're going to get into more intensive stuff next week. You all remember it's day off for Thursday and Friday. Oh, sorry, Saturday and Sunday, and we shall meet on Monday again now in the session. And for everybody who's coming, please come in time.
नहीं तो मिस आता है। सर, हाँ जी, बोलो। एक और एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म। इज इट ओके टू हैव आइडेंटिटी क्राइसिस? No, it's not. Depending on what you want to have crisis for. एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि अ, मैं मतलब क्या हूँ, मतलब मेरा रोल क्या है, ऐसे वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपका क्या रोल बड़ा करना चाहिए? सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपका रोल बड़ा सिंपल है, सिर्फ सांसें लो। बाकी सब आने दो आपके पास, फिर देखो क्या क्या काम करने को आता है वो करो। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। आएगा ना, एक्शन। आएगा। ओके। बीच में ना एक टाइम पे ओके। मेरे पास 6 महीने नौकरी नहीं थी, तो मैं ऐसे परेशान घूमता था। माय सिस्टर टोल्ड मी समथिंग नाइस। शी सेड एंजॉय दी 6 मंथ्स, ये दोबारा जिंदगी में नहीं आएंगे, फिर काम में लग जाओगे। तो जब तक कुछ आप जैसे वो दुनिया बोलती है ठोस आपके पास नहीं आता है, तब तक सांसें लीजिए, ब्रीथ करिए, रिलैक्स करिए, आ जाएगा। और एंड कीप लेकिन फोकसिंग ऑन फाइंडिंग समथिंग। यस, आसपास वाले वो करने नहीं देते हैं। अरे कोई ऐसा। किसी के बोलने से क्या होता है? करो, क्या सुनो या- सबकी, करो अपने ना। यही तो हम बोल रहे हैं ना, सब कि लोगों को बोलने दो जो बोलना है, उससे आपको क्यों परेशान हो रहे हो? Of course, take the यस। energy from that and continue to look for work. Nobody's saying don't look for work, and try out different things. पर उससे परेशान मत हो, बस breathe till you get to the point where you have something concrete in your hands. Okay? यस। यस। ओके। थैंक यू सर। All right. चलिए, questions 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's take a deep breath. Oh. Oh. I thank you all for joining me today. Without you, there would be no workshop. Thank you, thank you, thank you, and be blessed. Yes, frequency can be risen very easily.